Hello, Assalamu alaikum, everybody. How are you? I can see that there have been five candidates who's got online. So is it Dr. Sabiha, Ghazala, Sundar Shakur? Are you online? Yes. So welcome to our session. So how are you, Sabiha? I'm good, ma'am. How are you? I'm fine. So where are you working? Sabiha, where are you working? Madam, nowadays I'm preparing for exam. Working in, not working anywhere. So where are you basically from? Which city you are? Ma'am, I'm done training from the railway hospital, Pindi. Okay, so you're from Rawalpindi. Okay, so that's good to know. So what about Sundar Shakur and Ghazala? Can you introduce yourself? Hello, Sundar, are you there? Yes, Ghazala? Yeah, Sundar, can you tell me about yourself? ma'am. I have done my MCPS from CMH Okada. Okay, so Now you're currently working in DHQ. in Okada? Yes, ma'am. Okay, so you're from Okada. Okay, that's good to know. What about you, Ghazala? Madam, now I'm at home. Came from the Saudi. Sorry, I couldn't hear you. From where you are? I'm here in Hyderabad for preparation of exam. I came from Saudi. You came from Saudi Arabia? Yes, madam. Okay, that's good to know. So are you working in Saudi Arabia? Now I'm leaving because of my exam for some time. So you were working there? No, I'm not. Okay, no problem. So after the exam, you would be able to work there. Okay? Yes. Best of luck Sure. in the exam. Thanks. Okay, so anybody else who is there with us and hasn't had an introduction with us can have an introduction with us first, and then we can proceed for the webinar lecture. Is there anybody else we have missed in introduction? Okay, so let's just not waste our time and we should start our lecture. Okay, so today we will be discussing about emergency contraception. So this is a very important topic and we usually ignore it because we think that this is the most easiest topic of the contraception. But it is actually not that much easy. So while understanding this topic, what we need to do is that we need to follow a guideline, and we usually follow guideline from 2020 December, this recently upgraded guideline from FSRH. So this is the table when you open that FSRH guideline. This table usually looks very, very confusing when you look at it for the first time. So after our webinar, you will be able to grasp this table very easily, and also will be able to solve your important questions, which usually comes as single best answer questions in FCPS exam and also in MCPS and all the international exams of the world. There are no other guidelines in the world recently. So the FSRH guideline serve as the main template through which all countries usually follow how the emergency contraception is given when there has been some problem. Okay, so first you should know that how many types of emergency contraceptions are there. Usually there are 3 methods of EC methods, which has been followed in the UK and followed by all of the countries in Europe, America even, and also in Asia and South Asia. Excuse me, ma'am, your screen is not visible. So you're not able to see the screen? Let me share it again. Okay,
So is this visible to you all? Yes, ma'am. Okay. Yes, So these are ma'am. contraception methods. So first one is the copper coil. It is an intrauterine contraceptive method, and the second one is levonorgestrel LNG-EC. We call this as Levanil pills, which are available in United Kingdom and in Pakistan also. In Pakistan, it comes with the name of EC pill, but in UK, it comes with the name of Levanil. Now, the third thing is ulipristal acetate EC pill. We call this as LR1, and this doesn't come in Pakistan, but it's available in other countries, and that comes in a dose of 30 milligram single oral dose. For copper coil, this is actually retained until the pregnancy is excluded, and the important benefit of this method of emergency contraception is that we can use it for ongoing contraception. Now, how many time it is required? Now, what is the time limit in which we can plan for copper coil? So it can be placed within 5 days, that is 120 hours after the first unprotected sexual intercourse in a cycle, or within 5 days after the earliest estimated date of ovulation. Okay, girls, this is a very important table. इस गाइडलाइन में बहुत सारे टेबल्स हैं जो बहुत कंफ्यूजिंग है. अगर आप वो टेबल समझ लें, देन दुनिया का कोई भी एग्जाम दे लें, you will be able to answer all your questions related to emergency contraception. Okay, so अगर आपको किसी भी लाइन की समझ नहीं आती, so raise your hand and ask me that why this is written this way, so that I can explain you in detail to make you more clear in your concepts regarding emergency contraception. Okay, so copper coil डलेगी अगर unprotected sexual intercourse हुआ है within 5 days of sex 120 hours में, और अगर आपको लगता है कि the patient is having regular cycle और उस regular cycle में उसका ovulation जो है 14th day पे expected है, and that 14th day आप ovulation के within 5 days के अंदर अंदर भी आप copper coil डाल सकते हैं. So this line is very important, note it down. So we are going to discuss it in further, detail once we are going to move forward in it. Acha, levonorgestrel EC. So this is a pill. It has progesterone in it. Dose of 1.5 milligram as a single dose, and it is licensed for use within 72 hours. Although कुछ guidelines कहती हैं कि you can use it within 96 hours, लेकिन the best line of treatment for the patient who comes to you in ER and she asks for emergency contraception, it should be within 72 hours. Okay. Now the third one is that ulipristal acetate, UPE, LR1. So it is actually a progesterone receptor modulator. और ये आपने देखा भी होगा कि heavy menstrual bleeding के patients जब हमारे पास आते हैं, उसमें भी हम LR1 देते हैं. और अभी कुछ recommendations ऐसी आई हैं जिसमें उसमें लगा है कि there are some safety concerns regarding LR1 to the liver profile of the patient using this, क्योंकि उनमें हम 13 weeks के लिए देते हैं dose BD में. तो उसमें उन्होंने कहा है कि आपने अगर उनको देनी है तो you have to monitor ALT and AST of that patient. और अगर और अभी जो न्यू रिकमेंडेशंस है उसमें उन्होंने उसको विदहोल्ड कर दिया बिकॉज ऑफ द सेफ्टी कंसर्न्स. और ये उन पेशेंट्स में हम देते हैं ताकि हम हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग को ट्रीट कर सकें, क्योंकि ये रिसेप्टर मॉड्यूलेटर है. ठीक है, ये प्रोजेस्टेरोन को एक्ट नहीं करने देगा, जिसकी वजह से हमारी विड्रॉल ब्लीड और ये सब चीजें मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी हार्मोनल इरेगुलरिटी की वजह से जो हार्मोनल इंबैलेंस हो रहा है और वो आगे हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीड कर रहा है. सो दैट इज द रीजन दिस कैन आल्सो बी यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीड. Now, this progesterone receptor modulator, when we can use it as emergency contraception in a dose of 30 milligram, और ये आपने within 5 days के अंदर यूज करना है after unprotected sexual intercourse. It's same like copper coil. अब डिफरेंस ये है कि ये within 5 days after the earliest estimated date of ovulation के अंदर भी यूज किया जा सकता है. लेकिन जो अर्ली ब्रिस्टल है ये 120 आवर्स है तो सही, बट आपको मेक श्योर करना है कि शी शुड बी विद इन 14 days ऑफ हर रेगुलर साइकिल, या फिर एलएच पीक ना हुई हो तो तब हम यूज कर सकते हैं. ओके, सो दीज आर द 3 pills. So now next slide is also very important. Okay, so there's some problem in the slides.
Okay, let me go to the next slide. Now, let me just tell you about a little bit detail of copper coil. So how it works is that the main primary mechanism is inhibition of fertilization by its toxic effect on sperm and ova. So the other thing is that it also affects motility and viability of sperm and the viability and transport of ova. अगर fertilization हो जाए तो इसका action ये होता है कि it causes some local endometrial inflammatory reaction resulting from the presence of copper coil और वो आगे जाके implantation करती है. So that means it has pre and post fertilization mechanism of action जिसकी वजह से pregnancy नहीं होती. And even pre-fertilization mechanism, you can use it even if she is within 14 days of her cycle. And you can use it as a post-fertilization mechanism. That means if an egg has been released after the ovulation, still within 5 days, there is possibility that it is going to cause some, it is going to interfere with the post-fertilization mechanism because of some local endometrial inflammatory reaction. And then this is not going to cause implantation of the fertilized egg. Okay. So this is the second mechanism through which copper coil can be used as emergency contraception. और इन्हीं दो properties की वजह से it's used as first line mechanism of emergency contraception if a girl or a woman comes to you after unprotected sexual intercourse. Now this copper coil can be inserted up to 5 days after the first you've seen a cycle. Given that the earliest implantation is believed to occur 6 days after ovulation, and over 80% of implantation occur 8 to 10 days after ovulation, this can be inserted up to 5 days after ovulation, before the process of implantation has begun. This line is very important because यही चीज आपको बहुत सारे SBS solve करने में help करेगी. Now the second tablet, second mechanism is Ulipristal. We call it as LR1. It is a progesterone receptor modulator. It acts by delaying ovulation. अब ये क्या करेगी? Within 14 days of a cycle में use होनी चाहिए, and it should delay the ovulation. वो इस तरह करेगी कि ये LH peak नहीं होने देगी. And this delays ovulation even after the start of LH surge. तो पहले LH surge होता है, उसके बाद LH peak होता है. LH surge तक levonorgestrel EC act करती है, जो कि तीसरी पिल है हमारी. This is the progesterone used in a dose of 1.5 milligram. और LH surge के बाद यानी LH peak आता है, और जब peak आती है LH की तो तभी हमारा ovulation का process start हो जाता है. तो Ulipristal levonorgestrel EC pill से ज्यादा अच्छी क्यों है? Because it acts after the LH surge even before LH peak, जिसकी वजह से it impairs or delays the process of ovulation, or ovulation inhibit हो जाती है at or after the LH peak. So this line is very important क्योंकि ये भी बहुत सारे SPS में आती है. Ulipristal LR1 cannot inhibit ovulation at or after the LH peak, but it can inhibit ovulation before the LH peak. Okay, so remember this point also. Now, copper coil is the most effective method of emergency contraception. So first choice of emergency contraception, once you are going to see, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रही कि कौन सा अच्छा है, within 14 days, after 14 days, या कुछ समझ नहीं आ रही कि 5 मतलब ovulation इस patient की हो चुकी है या नहीं, if you see 3 options there, copper coil, Ulipristal, levonorgestrel, so you just go for the answer of copper coil, because this is the most effective method even within 14 days of ovulation and after ovulation, but within 5 days of the cycle of ovulation. Okay, so Ulipristal, it can be used 120 hours, लेकिन ये आपने guidelines में ये बात नहीं लिखी होती कि within 14 days of a regular cycle. So it wouldn't be a good option if the patient has come to you and she's asking कि डॉक्टर साहिबा मुझे emergency contraception चाहिए, मेरी UPC को यानी unprotected sexual intercourse event को अभी सिर्फ और सिर्फ 96 hours हुए हैं, और जो है मेरा आज 17th day है. Now she has gone beyond 14 days of her cycle, so Ulipristal is not a good option here. Okay, so you're going to take for copper coil. Okay, so levonorgestrel 72 hours के अंदर आती है, but within 14 days of a cycle.
तो आपका क्वेश्चन हमेशा MCQ या SPA सॉल्व करते हुए ये होना चाहिए, इवन इफ यू आर टेकिंग हिस्ट्री इन अ स्टेशन, जो कि MRCG पार्ट 3 की तरह के हो चुके हैं FCPS में भी, तो यू शुड आस्क टू द पेशेंट फर्स्ट 3 क्वेश्चंस कि आपकी साइकिल रेगुलर है या नहीं, व्हेन वाज योर लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, एंड हैव यू यूज्ड इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन बिफोर इन दिस साइकिल। अच्छा, अब ये 3 सवाल पूछने की वजह ये है कि हम पहले चेक कर रहे हैं कि उसकी साइकिल रेगुलर है कि नहीं, तो हम उससे पूछ रहे हैं कि लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड कब हुआ था। अगर उसकी साइकिल रेगुलर होगी तो उसका ओवुलेशन 14 डे पे हो रहा है, अगर उसका साइकिल इरेगुलर है तो वो फिर 14 डे रूल से बाहर चली जाती है। और उस तरह के ऑप्शन में जब उसको पता नहीं होता कि इरेगुलर साइकिल्स हैं और आपको नहीं पता कि ये विद इन 14 डेज में आई है या आफ्टर 14 डेज ऑफ ओवुलेशन आई है, तो आपने उसमें फर्स्ट चॉइस में हमेशा कॉपर कॉइल टेक करना है। बट इफ शी कम सेज माय साइकिल इज रेगुलर डॉक्टर, मेरी लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड 7 दिन पहले थी और मेरा सेक्सुअल इंटरकोर्स 72 आवर्स पहले हुआ है, तो फिर तो जिंदगी आसान हो गई। पहली ऑप्शन में लेवोनॉर्जेस्ट्रिल आएगा और सेकंड ऑप्शन में प्रेस्ट्रिल आएगा और थर्ड ऑप्शन में आप कॉपर कॉइल लिख सकते हैं। ओके, तो ये मेन कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। Now, both oral emergency contraceptions are ineffective after ovulation. So keep this line in your mind. This is a very important line. If you remember this line, ovulation का मतलब 14th day of your cycle. तो जब ये आपने अपने जहन में बना लिया, अब आफ्टर ओवुलेशन इसलिए लिखा है कि किसी की साइकिल रेगुलर 14 डेज की ना हो, मतलब हो सकता है वो 35 डेज की हो और उसकी जो ओवुलेशन है वो हो सकता है कि 20th डे पे हो रही हो। तो दैट इज द रीजन कि हमें सबसे पहले साइकिल का ओवुलेशन डे मालूम चेक करना है कि उसका ओवुलेशन डे कौन सा बन रहा है, एंड देन वी हैव टू चेक कि उसका लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड कब था, एंड देन वी हैव टू कैलकुलेट कि व्हिच इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन वी हैव टू गिव टू द पेशेंट बिफोर ओवुलेशन। वी हैव 3 choices: copper coil, LO1, levonorgestrel. But after ovulation we have only one choice, that is copper coil. Okay, so if you do not understand any point, you can ask questions later on, and try to listen each and every point I'm telling you in this presentation, because this is a very important lecture. We take it very easy, but यही सबसे important point है जहाँ पे हम mistakes करते हैं। अच्छा, अब भी कुछ factors हैं जो emergency contraception की choices को भी affect करते हैं। One of that is BMI. अगर BMI question में you see this 26, then you are going to go with all the choices. But if you see more than 26, okay, so 26, if you see this 26 or 26 or more, that means now we have to go for levonorgestrel double dose. Okay, you cannot do double dose of LR1, and copper coil you don't need to double your dose. Okay, so you check in your history, जो patient का scenario आपके पास होगा कि 20 साल की लड़की आई है, she has a regular cycle with last menstrual period 7 days ago, you see 72 hours ago, and she is having a weight of more than 26 BMI or more than 70 kg. So now here you are going to go with the choice of 3 milligram levonorgestrel, that is Levonale pill, and or if there is an option of copper coil, then you will go with the copper coil. Okay, अच्छा, अगर दोनों सही वाली ऑप्शंस लिखी होंगी, लेवोनॉर्जेस्ट्रल 3 मिलीग्राम लिखा होगा और कॉपर कॉइल लिखा होगा, तो वो किस पे टिक करेंगे? मोस्टली कहेंगे कि 72 आवर्स के अंदर आ रही है, विद इन 14 डेज के अंदर आ रही है, BMI भी 70 से अबव है और 3 मिलीग्राम की लेवोनॉर्जेस्ट्रल भी चॉइसेस में दी हुई है। तो उस केस में बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो लेवोनॉर्जेस्ट्रल के ऊपर टिक कर लेते हैं। हाँ, ये अच्छी ऑप्शन है, लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन कॉपर कॉइल है। ठीक है, सो कॉपर कॉइल के ऊपर आपने टिक करना है। अब ये रीजन क्यों है? क्योंकि कॉपर कॉइल आगे से क्विक लॉन्ग स्टार्टिंग इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन के तौर पे भी यूज की जा सकती है। वी आर गोइंग टू प्लेस दिस कॉपर कॉइल टू दैट पेशेंट, और हम उसे कह सकते हैं कि ये ऑनगोइंग कॉन्ट्रासेप्शन के लिए भी आप यूज करती रहे जब तक आपको कोई और तरीका समझ नहीं आ जाता हमल करने का। अदरवाइज क्या होगा, वो लेवोनॉर्जेस्ट्रल लेगी और फिर अगली दफा इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन लेने आपके क्लिनिक में पहुंची होगी। तो दिस इज हाउ यू जज योर SPA, और आप उसमें से सिंगल बेस्ट आंसर निकालते हैं, नॉट द करेक्ट आंसर बट द बेस्ट आंसर। ठीक है, तो कॉपर कॉइल फिर आपकी अच्छी ऑप्शन रहती है। नाउ द सेकंड फैक्टर जो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन की डिसीजन को इफेक्ट करता है
This is the enzyme inducers. So आपने उसकी हिस्ट्री में चेक करना है कि if she is epileptic, और अगर वो एपिलेप्टिक है या HIV है उसको, या कोई और पेशेंट मतलब TB की पेशेंट है अगर फेम्पसिन ले रही है, और अगर वो एपिलेप्टिक है तो वो एंजाइम इंड्यूसर्स ड्रग्स ले रही है, फॉर एग्जांपल ऑक्सीकार्बेजीन, कार्बामेज़ेपिन, टोपिमायरेट, फेनिटोइन, तो ये चीजें अफेक्ट करेंगी। इसी तरीके से कुछ प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हैं, यू हैव टू चेक इन हिस्ट्री, या फिर आपके सिनेरियो में कि कोई ऐसी चीज तो नहीं ले रही, क्योंकि इसमें भी हमारे पास डबल डोज लेवोनॉर्टिस्ट्रेट की हो जाती है, and we do not do double dosing of LR1. So that's the reason we're not going to go with this option, and property is not affected with any enzyme inducers. So what do you think? एक epileptic patient आपसे emergency contraception मांगने आई हुई है, are you going to go for levonorgestrel? क्योंकि वो तो quick starting method of contraception if you haven't started, so that means she's going to again land up with the epilepsy condition again in your OPT, asking for emergency contraception. So this is not a right option. So the right and the best option would be a choice of copper coil, where we're going to give the insertion of it and also can be used as ongoing contraception, ताकि वो patient बार-बार आपके पास मत आए. Okay, I hope I'm clearing most of your concepts. If you have any questions, you can stop me and ask it at any time, okay? So now, the third questions which usually come in exam is women requiring emergency contraception after sexual assault. Acha, we do not have any guideline in Pakistan regarding sexual assault, but we do have guidelines of this in United Kingdom, in Ireland, in Scotland, and also in USA. तो हमारे बहुत सारे questions जो हम पाकिस्तान में आंसर कर रहे होते हैं, especially FCPS और MCPS के एग्जाम में, so we have to follow these guidelines. तो उसमें जब पेशेंट के साथ कोई most of you would have been working in tehsil headquarter hospitals or DHQ hospitals which are non-teaching in government peripheries, so they would know कि कितने assault के और rape cases आते हैं. So nobody is actually bothered requiring asking these questions to young girls who's been coming with sexual assault cases in Pakistan. So you should now, as a candidate of MCPS and FCPS, know that after acquiring this diploma, if you're sitting in emergency or labor room and there is a sexual assault rape case that comes to you and asking for, MLC, then what questions you have to ask? So first, आप उसकी you need to inquire about her emergency contraception requirement. वही questions, last menstrual period, is the cycle regular or not, what is the weight of the patient, any medical condition she has been having, any allergy. क्यों एलर्जी का क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कॉपर कॉइल के साथ बहुत सारे लोगों को एलर्जीज होती हैं, और सेक्सुअल असॉल्ट पाकिस्तान में तो हम अगर वो 20 इयर्स या 20 से कम की आ रही है तो हम उसमें नहीं जाते कॉपर कॉइल के ऑप्शन में, बट इन यूके जहाँ पे वो सेक्सुअली एक्टिव लड़कियां उनके साथ रेप हो जाता है तो हम उसमें कॉपर कॉइल के ऑप्शन सोचते हैं, तो इसलिए आपकी कॉपर कॉइल के क्वेश्चन को भी, कॉपर एलर्जी के क्वेश्चन को भी अपनी हिस्ट्री में इंक्लूड करना बनता है. अदरवाइज यू कैन स्किप दैट क्वेश्चन जिसमें आपने कॉपर नहीं देना. अदरवाइज बहुत सारी जो रेप केसेस आती हैं जो पेशेंट्स दे ऑलरेडी मल्टी ग्रेविडास एंड दे बीन रेप्ड, क्योंकि वहाँ पे पाकिस्तान के देहाती इलाकों में अक्सर ऐसा हो रहा होता है, तो देयर यू कैन आस्क दिस क्वेश्चन बिकॉज यू हैव अ प्लान फॉर कॉपर कॉइल insertion also. So women requiring emergency contraception after sexual assault, they should be offered all methods of emergency contraception including copper coil. क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी confusion होती है कि when the patient comes to sexual assault, there's an increased chances that she might have had all types of infection, और पता नहीं किस किसने उसके साथ रेप किया है, कौन कौन सी एथनिसिटी के लोग थे, हो सकता है उसमें कुछ के HIV हो पॉजिटिव, और क्योंकि उन्होंने आगे भी बहुत सारे रेप्स किए होंगे, और हो सकता है कि उसमें गनोरिया PID चल रहा हो उन मर्दों में, तो उसमें गनोरिया और क्लमीडिया के होने के चांसेस भी हैं. तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं जी कॉपर कॉइल नहीं देनी चाहिए, बट नो, इट इज नॉट द केस. It is recommended that all the women at risk of pregnancy after sexual assault are offered a copper coil if within the appropriate time frame, as it is the most effective method of emergency contraception. तो फिर क्या किया जाए जिन पे शक पड़ रहा है? सबसे पहले तो उसने कहा है कि फोरेंसिक एग्जामिनेशन जरूर डिस्कस करें वुमन के साथ विद द कंसिडरेशन ऑफ द टाइम फ्रेम फॉर कलेक्शन ऑफ फोरेंसिक सैंपल, लेकिन उसमें उसकी प्रेगनेंसी ना हो जाए इस चीज को भी बैलेंस आउट करना है. अगर वो कहती है कि नहीं मुझे फोरेंसिक एग्जामिनेशन नहीं कराना, अरेंज फॉर द कॉपर कॉइल इंसर्शन
और आपने उससे बस पूछना है कि एनी वेजाइनल डिस्चार्ज, वो बंदे कितने थे, उनकी ओरिजिन क्या थी। फॉर एग्जांपल अगर ये रेप केस यूके में आता तो हम उससे ये सवाल पूछते कि उन बंदों में से कितने काले थे, and how many were, what was the ethnicity of those men who attempted this rape with you. Why we're asking this question? Because we actually are trying to rule out any this possibility of having HIV to those men. क्योंकि ब्लैक एथनिसिटी और जो मतलब यूरोपियन एथनिसिटी के लोग नहीं होते, they are most likely to have gay relationships, और उनकी वजह से और टैटूइंग करते हैं और वो दूसरे मुल्क से आए होते हैं, और जिसकी वजह से हो सकता है we do not know about their history back at their home country. तो इस वजह से most likely to be at risk of having sexually transmitted infections like syphilis and also HIV and gonorrhea and chlamydia. तो इस तरह के क्वेश्चंस हम जरूर पूछते हैं बिफोर इंसर्शन ऑफ कॉपर कोयल, एंड इफ वी हैव दीज हाई रिस्क टाइप ऑफ द आंसर्स, या देयर वर 3 men और वो काले थे और वो मतलब they were not like the normal people, वो मशहूर हैं इन कामों के लिए, या पाकिस्तान में जैसे है कि एक गैंग ने किया, गैंग रेप किया, मल्टीपल लोग थे, तो वहां पे हमें फिर सैंपल लेके कॉपर कॉइल डालना पड़ता है और उसको एंटीबायोटिक का कवर भी देना पड़ता है, क्लेमीडिया गोनोरिया का, और उसको पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलेक्टिक मेडिसिन फॉर HIV भी स्टार्ट करनी पड़ती हैं, और फिर हमें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन टीम के साथ कांटेक्ट रहना पड़ता है, और क्लेमीडिया गोनोरिया के लिए 2 वीक्स के लिए हमें मेडिसिन देनी पड़ती हैं, और फिर टेस्ट ऑफ क्योर करना पड़ता है पेशेंट का, so that she doesn't land up to the complications of pelvic inflammatory disease and also ectopic pregnancy later on. और इस तरह के पेशेंट्स का हम तीसरी चीज पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर PTSD एनालिसिस भी करते हैं, जिसमें साइकोलॉजिकल हेल्प भी चाहिए होती है। दूसरी तरफ हम पुलिस की इन्वॉल्वमेंट करके फोरेंसिक एग्जामिनेशन को पॉसिबल करते हैं इफ शी इज विलिंग टू हैव फोरेंसिक एग्जामिनेशन। अगर वो विलिंग ना हो तो हम उसे एक और ऑप्शन भी डिस्कस कर सकते हैं कि वी आर गोइंग टू टेक सम सैंपल्स राइट नाउ एट दिस मोमेंट, और जब बाद में क्योंकि अभी हम DNA कलेक्शन एनालिसिस कर सकते हैं और मुजरिम को पकड़ सकते हैं, लेकिन अगर वो चाहती है कि वो एग्जामिनेशन फोरेंसिक लैब में ना दिया जाए तो हम उसको अपने पास सेव रखेंगे, और लेटर ऑन इफ शी थिंक्स 1 or 2 वीक्स के बाद कि वो केस करना चाहती है तो उन एग्जामिनेशन को फोरेंसिक टीम के पास पहुंचा दिया जाएगा, और अगर वो मान जाए तो फर्स्ट वी अरेंज फॉर फोरेंसिक एग्जामिनेशन, एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू प्रोवाइड हर विद द इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन। अगर उसके पास कोई ऐसी हिस्ट्री मिल जाए कि शी हैज अ मेडिकल हिस्ट्री ऑफ ट्यूबरकुलोसिस और chronic infection which has been going on in the form of vaginal discharge, then we give a oral emergency contraception pill जिसमें ELA1 आएगी और levonorgestrel आएगी, irrespective कि उसकी साइकिल विदिन 14 डेज है या आफ्टर 14 डेज ऑफ ओवुलेशन है, क्योंकि अभी हम कॉपर कॉइल नहीं दे पा रहे, हमने कोई ना कोई कॉन्ट्रासेप्शन को दे देनी है। तो अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आए और नीचे इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन ऑफर ईसी लिखा हो तो ऑफर ईसी जरूर करना है, ऐसे खाली घर नहीं भेजता, और आपने कहना है कि मतलब अगर उसमें कोई ऐसी कॉन्ट्राइंडिकेशन बन रही हो कि कॉपर कॉइल नहीं रख सकते, ऑफर ईसी जरूर कर देना। आगे मैडम नहीं वो क्वेश्चन था और उसमें हमें नहीं पता था विद इन 14 डेज है या नहीं है, लेकिन उसमें हिस्ट्री ऐसी दी हुई थी कि पेशेंट को वजाइनल डिस्चार्ज है, हाई रिस्क, मतलब उसमें मल्टीपल पार्ट लोगों ने उसका मतलब गैंग रेप किया था, तो उसमें हम कॉपर कॉइल की ऑप्शन पे टिक नहीं कर सकते, समझ नहीं आई थी क्या है, तो इसमें ओरल ईसी की ऑप्शन अगर है तो ऑफर ईसी। Okay, so why I'm telling you all this? Because most of the tricky questions come in an exam like this and you become confused. So I'm giving you all the scenarios of what you have to offer, and these are from the guidelines. So I'm now giving you this lecture. Just go through this lecture, and after ending up this lecture, just open this FSR guideline, और फिर आप पढ़ेंगे तो आपको सारी समझ आ जाएगी. Now, if a woman accepts the offer of forensic examination, it should be explained that clinical examination and proper insertion should be deferred until after forensic examination has taken place in order to maximize potential for capture of salient DNA. So, यही चीज मैंने अभी आपको explain किया. Some women may choose to prioritize pregnancy risk reduction and copper coil insertion above forensic examination if this is to be a delay in arranging later. Clinicians should ensure that they provide adequate information to allow a woman to make an informed choice in this regard. Dependent on her own priorities, it is important that her decision is respected. Okay, I hope I've cleared all these points with you.
Now, if a woman opts to have a copper coil inserted for EC, emergency contraception, after forensic examination, then her EC provider, that is emergency contraceptive pill provider, should arrange for copper coil insertion to be carried out without delay after forensic examination has taken place. Okay, so oral EC should be offered in the interim in case copper coil cannot be inserted or the woman later changes her mind about the copper coil insertion. उसको आपने ऐसे घर नहीं जाने देना. You just have to offer something. Okay, the woman who decline copper coil after sexual assault should be offered oral EC. So, ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रही, ये मैंने अपनी तरफ से लाइन नहीं लिखी. This line has been taken from FSRH guideline. So if you see any MCQ, SBA, और उसमें ये चीज आ जाए, then just keep it in your mind that you have to choose oral EC in your answer. ठीक है? तो वो इन्हीं चीजों को देके हम अपने SBS बनाते हैं. Now you should know about the side effects of EC. So headache, so nausea and dysmenorrhea. So these are the side effects which are common to both irrepressible acetate and also the Levanil and have been reported in about 10% of the cases. And vomiting. So ये भी एक बड़ा important single best question आ सकता है और ये आता है कि patient has vomited within 3 days of taking 3 hours. So option repeat dose of EC should be given. Okay. The third is complication is ectopic pregnancy. Now अगर आप थोड़ा सा इसको viva point of से भी लें, तो once you're explaining about a different option, आपके पास patient आती है, you start asking those questions और अपना scenario बनाते हैं कि भी इसको कौन सी emergency contraception देनी चाहिए. You ask about the weight of the patient, you ask about कि इसको कहीं कोई medical condition नहीं है, क्योंकि asthma की condition में हम ELA1 नहीं देते और कभी कभार हम asthma की condition में ELA1 देते हैं, but if we ask कि asthma है, आप glucocorticoids तो नहीं ले रही, if that asthma is control on glucocorticoid तो फिर ELA1 नहीं देते. Otherwise asthma के patients में ELA1 दे सकते हैं, but this is a category 2 where it becomes category 4 if she's on asthma and she is taking glucocorticoid as an activity, because ulipristal acetate has an anti-glucocorticoid effect and exasperates the asthma on the other hand. Okay. So आपने उसका पूछा कि if she has any copper coil, उसकी कोई surgery तो नहीं हुई और उसको कोई discharge की complaint तो नहीं है, because you have to decide for copper coil insertion also at the same time. So once you have asked these questions, the cycle is regular, when was the last UPC occurred within 72 hours, or exactly time note करना होता है 10 बजे हुआ था या और exact hours आपने note करने होते हैं उसमें. Once you're taking history to these patients for evaluating कि इसको कौन सी emergency contraception चाहिए हो. So you have asked these 7 questions. Now you ask कि इससे पहले भी UPC हुई थी. अब ये question हम क्यों पूछ रहे हैं कि ये आपकी last LMP ये है और आपका sexual intercourse कितने घंटे पहले हुआ था, और तीसरा हम सवाल पूछ रहे हैं कि इसी साइकिल में एक और intercourse हुआ, आपका unprotected sexual intercourse हुआ है या नहीं. Why we are asking this question? Because if she has taken ELA1, or if she says yes, मेरे पास मैंने इस इवेंट से पहले एक दफा पहले भी मेरे पास इसी साइकिल में ऐसे हुआ था और मैं डॉक्टर के पास गई, मैंने इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन पिल ली थी. अब आप उसे कहते हैं कि वो कौन सी पिल थी. Why you asking this question? कि अगर उसने ELA1 ली है तो ELA1 ही लेंगे. अगर उसने Levanil ली है तो then you're not going to give her ELA1. तो आप उसको Levanil ही करेंगे, सेम उसी साइकिल में आप रिपीट करेंगे. Why? अभी उसकी रीजन आगे आएगी. जब आपने ये सारे सवाल पूछ लिए और अब उसकी जो भी ऑप्शन है विद इन 14 डेज में आ रही है, 72 आवर्स के अंदर सेक्स आ रहा है उसका और कोई उसके अंदर कॉम्प्लिकेशन नहीं है, अब आपने सोचा कि इसमें लेवनॉर्जेस्ट्रिल भी फर्स्ट ऑप्शन बनती है, सेकंड ऑप्शन में ELA1 भी दे सकते हैं क्योंकि ये 120 आवर्स के अंदर भी है. If she says she has come with you with the intercourse unprotected sexual intercourse within 72 hours, तो उसके लिए Levanil भी बन गई ऑप्शन, ELA1 भी ऑप्शन बन गई, उसके लिए कॉपर कोयल भी बन गई. ठीक है, तीनों ऑप्शन उसके लिए. तो आप उसको तीनों ऑप्शंस के बारे में बताएंगे, आप उसको एक ऑप्शन के बारे में नहीं बताएंगे. जितनी ऑप्शंस उसकी बन रही हैं आप सारी बताएंगे. फिर आप ये कहेंगे कि you can also take Levanil. It comes in a tablet of 1.5 milligram. We're going to give you this. It's very effective, and 95% of the time, most of the women doesn't get pregnant. The second option is ELA1.
This comes with a dose of 30 milligram. We're going to give you one tablet. We can give this tablet usually within 120 hours. It is effective 95%. The third one is copper coil. The copper coil is 99% effective, and the further thing is that it comes in the form of a coil. We're going to insert it inside your womb, and the best thing is that you can use it even as a long-term contraception. तो आप उसको तीनों ऑप्शन इसलिए बता रहे हैं कि वो दवाई लेके घर चली जाएगी, फिर तीसरी दफा ना आ जाए आपके पास क्यूसी के बाद। अब उसको ये बता रहे हैं कि ये 2 गोलियां हैं तो सही, ये बेस्ट भी है, लेकिन इसके बाद आपको क्विक स्टार्टिंग कॉन्ट्रासेप्शन स्टार्ट करनी पड़ेगी। और दूसरी तरफ कॉपर कॉइल है जो 99% इफेक्टिव है, और ये इसके बाद आपको इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन के बाद क्विक स्टार्टिंग की जरूरत नहीं, क्योंकि ये खुद ही क्विक स्टार्टिंग कॉन्ट्रासेप्शन के तौर पे यूज होती रही। और वो कहती है कि मुझे भी सोचने का टाइम चाहिए, तो आप उसको, मैं भी नहीं सोच पा रही है मुझे कौन सी कॉन्ट्रासेप्शन लेनी है, मेरी तीनों ऑप्शंस बन रही हैं, तो डॉक्टर मैं क्या करूं? तो आप उससे कह सकते हैं कि अभी ओरल ले लो, अभी कॉपर कॉइल कर लो, और नेक्स्ट मेंसेस में तुम सोच लोगी तो हम निकाल देंगे और तुम्हें किसी और पिल्स पे डाल देंगे। इफ शी सेज कि नहीं मैं कॉपर कॉइल नहीं डाल सकती, क्योंकि फर्स्ट लाइन मैंने आपको कहा है कि फर्स्ट चॉइस हमेशा कॉपर कॉइल होगी, तो कॉपर कॉइल वो नहीं डलवाना चाह रही, तो आप उसे कहेंगे ठीक है अभी ओरल ले लें, लेकिन आप उसके बाद हमारे पास आ जाएं ताकि हम आपको कॉन्ट्रासेप्टिव क्लिनिक में भेज दें और आपको प्रॉपर कॉन्ट्रासेप्शन स्टार्ट करा दें। आप उसको बताएंगे कि अगर आप लेवनेल इस्तेमाल करेंगी, लेवनेल इस्तेमाल करने के फौरन बाद हम आपको कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप पहला 1 इस्तेमाल करेंगी तो हमें कुछ दिनों में आपको एडिशनल कॉन्ट्रासेप्शन भी देनी पड़ेगी, क्योंकि एला-1 प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर है और इसके फौरन बाद हम कॉन्ट्रासेप्टिव पिल इस्तेमाल नहीं कर सकते, हमें 5 दिन का इंतजार करना पड़ता है और फिर हमें कॉन्ट्रासेप्टिव पिल देनी पड़ती है, और उस कॉन्ट्रासेप्टिव पिल का असर भी आगे जाके 7 दिन के बाद आता है। तो इस पूरे अरसे में आपको कॉन्डम्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो एला-1 से ज्यादा अच्छी फिर लेवनेल हुई अगर वो कॉपर कॉइल यूज नहीं करना चाह रहे। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं ईसी पिल को समझने के लिए जो आपको पेशेंट को बतानी है, एंड यू शुड आल्सो नो, ये तभी पता होगी आपको, तभी बता पाएंगे पेशेंट्स को व्हेन यू नो दैट हाउ दिस इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन पिल्स आर एक्चुअली वर्किंग। इसी तरह आप अपने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जब कितनी सारी कॉम्प्लिकेशन आपके ज़हन में होती है, देन यू गो फॉर योर सिंगल बेस्ट आंसर। ओके, whenever you tell about different mechanisms of infections, how is it working, और इनके बाद कोई स्टार्टिंग मेथड कैसे स्टार्ट करना है, then you also have to tell that patient कि इसके साइड इफेक्ट्स क्या है, हेडेक, नोजिया एंड डिस्मेनोरिया, थोड़ी सी वॉमिटिंग और एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी हो सकती है। So she's coming, she's asking for emergency contraception, give emergency contraception, discuss option of quick starting method of contraception afterwards, और उसके बाद आपने उसके साइड इफेक्ट्स बताने हैं और उसके बाद उसका फॉलो अप बताना है। फॉलो अप, इफ देयर इज नो फॉलो अप, दैट मींस you failed the station. वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से भी दैट मींस कि सिंगल बेस्ट आंसर भी आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। Now the next is ongoing contraception. So if आपने copper coil use की है तो मैंने I have already told you before that copper coil can be kept for ongoing contraception. Levonorgestrel, it's a 11 pill. तो उसके बाद भी you can start immediate contraception, क्योंकि ये भी प्रोजेस्टेरोन है, प्रोजेस्टेरोन के बाद you can easily start continuation of this. अगर आपने CHCs यूज करनी है या प्रोजेस्टेरोन पिल्स यूज करनी है, you can start that. बट एला-1 के लिए आपको 5 days वेट करना पड़ेगा बिफोर स्टार्टिंग hormonal and abstain from sex with condoms. Okay, so this was the regarding the important points of emergency contraception. Now एक सबसे confusing चीज है, yeah, is there any question for me? Somebody wants to ask a question. I'm waiting. Okay, so I think nobody has any questions here with me. So this is a table I would like you all to see, क्योंकि ये table अगर आपने follow कर लिया, then you can solve all your questions related to emergency contraception. Okay, so hormonal methods of contraception. अगर आपके पास let's go towards the second table. Combined hormonal pill ले रही है patient. She's taking oral contraceptive pill, monophasic pill containing ethyl estradiol.
अब क्या होगा कि आपने हिस्ट्री ली, इफ ही हैज मिस्ड वन पिल कोई बात नहीं, अगले दिन दूसरी खा लो, देयर इज नो नीड फॉर इमरजेंसी कॉन्ट्रसेप्शन. लेकिन व्हेन दिस पिल, 2 pills are missed और more active pills are missed, अब क्या होगा? आपने देखना है कौन से वीक में ये पेशेंट आई है हमारे पास. अब कौन से वीक में आई है? वीक 1 में इमरजेंसी कॉन्ट्रसेप्शन देनी है, वीक 2 में कोई कॉन्ट्रसेप्शन की जरूरत नहीं है इमरजेंसी कॉन्ट्रसेप्शन की, ओनली नीडेड के आपने उसको एडिशनल प्रोटेक्शन देनी है फॉर 7 days ताकि पिल का एक्शन आ जाए. थर्ड वीक में आइए, फिर भी इमरजेंसी कॉन्ट्रसेप्शन की जरूरत नहीं है, थर्ड वीक में भी उसको एडिशनल कॉन्ट्रसेप्शन फॉर 7 days देंगे और हार्मोन फ्री इंटरवल बंद कर देंगे और पिल्स को कंटिन्यूएशन में रखेंगे. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट. ओके, सो नाउ अब मैं इसको पढ़ती हूँ कि यहाँ पे कैसे लिखा हुआ है. Emergency contraception is indicated if the pills are missed in week 1. Okay, so EC in week 1, and there has been UPC, unprotected sexual intercourse, or barrier failure during the pill-free interval or week 1. तो अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि एक लड़की आई आपके पास, उसने 2 पिल मिस कर दिए, उसका अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स हो गया है, वो वीक 1 में है, ठीक है, द ऑप्शंस जो सब जिस पे आपने क्लिक करना है वो होगी ऑफर EC प्लस एडिशनल कॉन्ट्रसेप्शन फॉर नेक्स्ट 7 days प्लस नेक्स्ट पिल ऑफ CHC. गॉट माय पॉइंट और नॉट? ठीक है, ये आपका टिक ऑप्शन होगा. सेकंड क्वेश्चन आपके पास यही आता है, पेशेंट आई है and she is there with you, she has missed 2 pills in her packet and she is in week 2. now what are the options? बहुत सारी options लिखी होंगी, offer EC और additional contraception, offer EC only, कुछ में लिखा होगा additional contraception. अब आपने टिक क्या करना है? no need for emergency contraception in week 2. week 2 में only additional contraception required for 7 days with condoms plus continuation of rest of the pills. Okay, ये ऑप्शन जहां पे नजर आएगी गो टिक मारो उस पे. थर्ड ऑप्शन, थर्ड सिनेरियो है, पेशेंट आई है, उसने 2 पिल मिस कर दी है, अब वो तीसरे हफ्ते में है, फिर ब्ला 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 ऑप्शंस होंगी, ऑफर EC करो, उसको जो है एडिशनल कॉन्ट्रसेप्शन दो विद कॉन्डम्स, या फिर नीचे ऑप्शन होगी ऑफर EC ओनली, या थर्ड ऑप्शन होगी एडिशनल कॉन्ट्रसेप्शन. तो अब आप किस में टिक मारेंगे? एडिशनल कॉन्ट्रसेप्शन फॉर 7 days, कंटिन्यूएशन ऑफ द पिल्स, ओमिट हार्मोन फ्री इंटरवल. तो ये आपकी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं इमरजेंसी कॉन्ट्रसेप्शन के, एंड दिस मेक्स यू वेरी वेरी कंफ्यूज, and that's the reason you do not offer the single best answers. I hope कि इस पार्ट की समझ आ गई है. Sabiha is with me and Ghazala and whatever. So the girls, are you following me? Dinesh, Ghazala, Nasreen, am I making your concepts clear regarding this emergency contraception? Karyal, Rafia? Yes. Okay. Okay. Now, if the scenario comes कि उसने पैच मिस कर दिया है और combined hormonal vaginal ring मिस कर दी है of 48 hours में, अब इस केस में क्या होगा? EC is indicated if patch detachment or ring removal occurs in week 1 and there has been a UPC or barrier failure during the hormone-free interval or week 1. Okay? अच्छा, अब ये हम सेकेंड लाइन की तरफ आ रहे हैं जो दोनों पैराग्राफ्स में लिखी है. If the hormone-free interval is extended, a copper coil can be offered up to 13 days after the start of hormone-free interval, assuming the perfect use. इसकी कुछ समझ आई है बच्चों आपको? ये क्या 13 days इसने बीच में फॉर्मूला बना दिया? Is anybody of you, would anybody of you dare to tell me कि ये 13 days क्या है? How this 13 days has been calculated? Okay, no worries. I'm going to explain you. So combined hormonal pills, whenever you are solving any questions relevant to combined hormonal pill, whether it be on patches, whether it be on ring or monophasic or any type of pill,
So once there has been a delay, if there is a delay of greater than 48 hours for in terms of detachment or ring removal, or in terms of pills, and there is a 48 hours, that means you have missed 2 pills. So now what you have to do, hormone free interval के 7 दिन, और so the guideline says कि जब भी आपकी हार्मोन पिल में इंटरवल ज्यादा आएगा 48 आवर्स का, तो उसमें क्या होगा कि wait, can you see my screen? Let me share my screen with you. Okay. So, when you give a larger break of more than 48 hours of these pills, तो क्या होगा? Now, can you see? All of you can see my screen now. Is my screen visible to you all? Yes, ma'am. Okay. So, जब भी कोई पिल फ्री इंटरवल एक्सटेंड होता है और greater than 48 hours में hormonal break आ जाता है, it is expected to have an ovulation on 8th day from the previous pill. Okay? और जब ovulation हो जाती है, तो within 5 days के अंदर you can still go for emergency contraception, और वो किस फॉर्म में होती है? कॉपर कॉइल की. तो इन्होंने कॉपर कॉइल की लाइन में कहा है 13 डेज के अंदर आप कॉपर कॉइल डाल सकते हैं इफ हार्मोन फ्री इंटरवल इज एक्सटेंडेड. तो ये वीक 1 के लिए है, और अगर आप पिल्स यूज कर रहे हैं, तो अगर क्वेश्चन में देखें कि वीक 1 है और वीक 1 में शी हैज मिस 2 पिल्स, इसका मतलब है कि स्टार्ट में उसने 2 पिल्स मिस कर ली और हार्मोन फ्री इंटरवल पीछे से चल रहा था. हार्मोन फ्री इंटरवल मेंसेस का पीरियड इंटरवल होता है, तो मेंसेस के फौरन बाद उसने पिल स्टार्ट नहीं की, 2 दिन भूल गई, तो इसका मतलब ये है कि पिछली पिल से 8th डे पे उसकी ओवुलेशन एक्सपेक्टेड है. सो दैट मीन्स कि अगर उसके फ्राइडे को मेंसेस स्टार्ट हुए थे, तो नेक्स्ट सैटरडे को वो ओवुलेट कर जाएगी अगर उसने पिल्स नहीं ली. तो अब जब ओवुलेशन हो जाती है, तो हमारे पास कौन सी इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन सबसे बेस्ट रहती है? लेवोनॉर्जेस्ट्रिल या एला-1 या कॉपर कॉइल. सो ओवुलेशन के बाद हमारे पास सबसे बेस्ट जो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन है वो कॉपर कॉइल की होती है. तो कॉपर कॉइल कैन बी इंसर्टेड इवन आफ्टर 5 days ऑफ ओवुलेशन. तो यहाँ पे उन्होंने ये चीज इसलिए कही है कि 8 days plus 5 days वो 13 days बनते हैं. If the hormone free interval is extended, a copper coil can be offered up to 13 days after the start of the hormone free interval, assuming previous perfect use. समझ आइए अभी आप सब लोगों को इस बात की? Now, यही चीज उसने वीक 1 के बारे में की है combined hormonal pills. ये और किसी जगह हम यूज नहीं करते ये 13 day फॉर्मूला फॉर कॉपर कॉइल, क्योंकि ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ वीक 1 के लिए है whenever you are using combined hormonal pill, rings or patches. Got it? I hope I've cleared this point with you all guys. तो अगर कोई सिनेरियो इस तरह का आए कि एक लड़की है, उसने अपनी पिल्स मिस कर दी हैं, हार्मोन फ्री इंटरवल के बाद 2 या पैच नहीं लगाया, 48 आवर्स से ज्यादा का टाइम गुजर चुका है, और अब उसके लिए सबसे फर्स्ट लाइन इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन कौन सी होगी, और नीचे तीनों ऑप्शंस लिखी है, और आप लोग टिक मार दें 11L की तरफ या एला-1 की तरफ, तो गलत आंसर हो जाएगा. तो द राइट आंसर वुड बी कॉपर कॉइल, और वो आप उसको विद इन 5 days के पास, और वो अगर वो क्वेश्चन में ये लिखते हैं कि वो पेशेंट आपके पास आई ऑन डे 12 पे है, तो अब आप सोचो में पड़ जाएंगे कि डे 12 क्यों लिखा है. तो वो डे 12 इसीलिए लिखा है कि वो ये बताना चाह रहे हैं कि 2 पिल मिस कर दी है, यूपसी हो चुकी है, हार्मोन फ्री इंटरवल एक्सटेंड हो चुका है, तो कॉपर कॉइल तो ओवुलेशन के बाद भी डल सकती है 5 days के. तो आपने हार्मोन फ्री इंटरवल एक्सटेंड हुआ, 8th डे पे उसकी ओवुलेशन हो गई, तो 5 दिन के अंदर अंदर अब भी डल सकती है. तो कॉपर कॉइल इज द नंबर 1 आंसर व्हिच आई हैव टू गो फॉर. आई होप आई हैव क्लियर्ड ऑल ऑफ योर पॉइंट. Somebody raised the hand. Who was that? Is there any? Yeah. Yeah, So what is I have a query. That this formula is also acceptable for the week 4.
No, this formula is not acceptable for week 4. This is only for week 1. You have to follow this guideline table if the hormone-free interval is extended. You are right in a sense कि अगर week 4 में उसकी tablet last वाली miss हुई है. जी, मेरे यही मतलब है जी. Yes, you are right in that case. तो उसकी last 2 tablets अगर miss हुई हैं और अब आप उसका hormone-free interval बंद कर देंगे. लेकिन अगर वो पेशेंट आपके पास आ रही है 9th डे पे या 10th डे पे, तो फिर आप उसे कहेंगे कि बीबी तुमने अपनी 2 गोलियां भी मिस की और माहवारी के बाद भी तुम मेरे पास लेट आई हो, अब तुम्हारी ओवुलेशन तो हो चुकी होगी और अभी भी तुम 5 डेज ऑफ ओवुलेशन के अंदर हो, सो ऑप्शन आपकी टिक पे कॉपर कॉइल ही जाएगी. आपका आंसर क्लियर हो गया? Got it? जी जी जी. Okay, so now this is how you're going to provide emergency contraception. I hope this table is clear for you all guys. So the remaining table I'm going to discuss now. Okay, so in exam, if you see a patient जो के combined hormonal contraception पे था या pills पे था और implant पे था, तो उसमें भी आप EC is indicated if there is unprotected sexual intercourse or barrier failure during or in the 28 days following use of liver enzyme inducing drugs. अच्छा, ये liver enzyme inducing drugs के साथ है. कुछ पेशेंट्स होते हैं जो combined pills या progesterone pills पे ले रहे हैं और साथ वो epileptic हैं और वो enzyme inducing drugs ले रहे हैं, तो उसमें आपने emergency contraception देनी है और वो आपको पता है कि कौन सी बेस्ट है. आप डबल डोज कर सकते हैं लेवोनॉर्जेस्ट्रेल की, यूलिप्रेस्टेल LR1 को यूज नहीं कर सकते और कॉपर कॉइल को यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो कॉपर कॉइल इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन रहती है क्योंकि आप उसको ऑनगोइंग कॉन्ट्रासेप्शन के तौर पे भी यूज करवा सकते हैं. सो यू आर गोइंग टू टेक ऑप्शन ऑफ ऑफर कॉपर कॉइल बिकॉज इट इज अनअफेक्टेड बाय लिवर एंजाइम. लेकिन अगर आपने लेवोनॉर्जेस्ट्रेल यूज करनी है तो डबल डोज देनी है. अच्छा, अब कॉपर कॉइल तो फौरन से ही जैसे ही डलती है फौरन से ही ओवुलेशन मतलब इम्प्लांटेशन नहीं होने देगी, ऑनगोइंग कॉन्ट्रासेप्शन के लिए यूज हो जाएगी. बट अगर ये यूज नहीं हुई और आपने इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन के लिए लेवोनेल दी है तो उसके लिए फिर उसको पिल्स अपनी स्टार्ट करनी पड़ेंगी दोबारा. तो जब ये स्टार्ट करेंगे तो एडिशनल कॉन्ट्रासेप्शन फॉर 28 डेज चाहिए होगा. ओके, तो अब आपके पास अगर चॉइस आएगी तो आपने 20 जैसी एंजाइम इंड्यूसर ड्रग्स का नाम देखा आपने SBA में, तो अब आपने वीक 1, वीक 2, वीक 3 उसी तरह फॉलो करने हैं जैसे मैंने पीछे बताए थे. अब एडिशनल कॉन्ट्रासेप्शन 7 डेज नहीं आपने टिक मारना, 28 डेज मारना. ठीक है, तो नाउ इफ यू आर डूइंग दिस देन दैट ऑप्शन जो होगा वो सिंगल बेस्ट आंसर में आपने टिक कर देना. ओके, नाउ अब पेशेंट पिल्स प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स ले रही है. अब आपने देखना है कि वो कौन सी पिल ले रही है. अगर तो वो ट्रेडिशनल पिल्स है या फिर वो दूसरी पिल्स हैं, और अगर वो दूसरी पिल्स हैं जो मिनी पिल्स होती हैं तो वो 3 घंटे भी अगर लेट हो जाए पेशेंट तो पिछली पिल से 27 आवर्स या फिर नेक्स्ट पिल के टाइम से 3 घंटा लेट हो जाए दैट इज 27 आवर्स, तो आपने उसको इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन दे देनी है. इसी तरीके से ट्रेडिशनल पिल की बात होगी कि 12 घंटे पिछली पिल के टाइम से, टोटल पिछली पिल मतलब टोटल अगर देखा जाए तो 36 आवर्स होते हैं. यानी अगर पिल का टाइम 12 आवर्स से ज्यादा एक्सीड कर जाए या फिर पिछली पिल से 36 घंटे से ज्यादा का टाइम हो जाए और डीजोजेस्ट्रल वाली पिल, तो फिर भी आपने उसको इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन ऑफर कर देनी है. EC is indicated if a pill is late or missed and there has been unprotected sexual intercourse or barrier failure before efficacy has been re-established, that is 48 hours after restarting. इससे सिर्फ हमें दो दिन चाहिए होते हैं. जब आपने पिल स्टार्ट की है 2 दिन के अंदर अगर उसका अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स हो गया और उसने कॉन्डम इस्तेमाल नहीं किया तो उसको प्रेगनेंसी हो सकती है, तो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन देनी पड़ेगी. लेकिन अगर 48 आवर्स के बाद अगर हुआ है तो देन देयर इज नो नीड फॉर EC. Timing of ovulation after missed pills cannot be accurately predicted. Copper coil is therefore only recommended up to 5 days after the first unprotected sexual intercourse following a missed progesterone only pill. Now, if POP has been taken in the 7 days prior to EC, the effectiveness of LR1 can theoretically be reduced. अब यहाँ पे ये बात देखनी है कि इस केस में सिर्फ आपकी 2 ऑप्शंस इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन की बेस्ट है और वो है लेवोनेल और कॉपर कॉइल. आप अगर प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल ले रही है और
उसने भूल गई वो पिल, और अब जो है आपके पास आई है कि मेरी अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स हो गया है, तो अब आप उसको लेवोनॉर्जेस्ट्रिल की ही ऑप्शन ईसी में देंगे, एलावन नहीं दे सकते, क्योंकि ये प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर है। इससे 7 दिन पहले प्रोजेस्टेरॉन या कोई भी हार्मोनल पिल नहीं ली होनी चाहिए, और इसके 5 दिन के बाद भी कोई हार्मोनल पिल हम यूज नहीं कर सकते। सो दैट मीन्स व्हेन द पेशेंट इज यूजिंग कॉन्ट्रासेप्शन मेथड जो कंबाइंड हार्मोनल पिल्स के हैं या प्रोजेस्टेरॉन पिल्स के हैं या इंजेक्टेबल्स के हैं, तो उस केस में हमारे पास एला-1 की ऑप्शन निकल जाती है। हमारे पास सिर्फ 2 ऑप्शंस रहती हैं, एंड दैट इज दी लेवोनिल एंड कॉपर कॉइल। तो ये 2 ऑप्शंस आपने अपने क्वेश्चन में पहले ये चीज देखनी है, फिर उसके बाद इन 2 ऑप्शन की तरफ आ जाना है, एला-1 पे क्रॉस मार देना है। आई थिंक आई एम क्लियरिंग ऑल ऑफ यू पॉइंट्स। ये थोड़ा सा ट्रिकी टॉपिक है, हम इसको आसान समझते हैं, बट दैट इज द डिफिकल्ट टॉपिक मोस्ट ऑफ ऑल। सो अब इंजेक्शंस की तरफ चलते हैं। अगर 14 दिन के ऊपर पेशेंट आए और अपना नेक्स्ट इंजेक्शन ड्यू ना लगवाए, तो फिर हम उसको ईसी पिल ऑफर करेंगे और उस इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन ऑफर करेंगे greater than 14 weeks after the last injection, but within the first 7 days after the late injection. Okay, तो टाइमिंग ऑफ ओवुलेशन जो है आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द प्रोजेस्टेरोन ओनली इंजेक्टेबल इज एक्सट्रीमली वेरिएबल। इसकी वजह से हम कॉपर कॉइल को रिकमेंड करते हैं कि अगर ओवुलेशन हो भी गई है तो विद इन 5 days कॉपर कॉइल इज द बेस्ट वन। तो अब हमारे पास जब भी इंजेक्टेबल्स यूज कर रहे हैं, हमारे पास एला-1 हम इस्तेमाल नहीं कर सकते बिकॉज दिस इज प्रोजेस्टेरॉन मॉड्यूलेटर। अब इसको जो है इफेक्टिवनेस एला-1 की जो है वो थ्योरेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। इस वजह से हमारे पास 2 ही ऑप्शन बचती हैं, कॉपर कॉइल और लेवोनॉर्जेस्ट्रिल। और लेवोनॉर्जेस्ट्रिल जो है पता नहीं वो ओवुलेशन इनहिबिट करती है कि नहीं, पता नहीं ओवुलेशन हो चुकी है कि नहीं, तो इन दैट केस हमें कॉपर कॉइल पे ही टिक मारना है। तो अपना रूल ऑफ द गेम ये रखें कि कॉपर कॉइल जब आपको नजर आए इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन, दिस इज द बेस्ट कॉन्ट्रासेप्शन व्हिच यू आर गोइंग टू ऑफर टू द पेशेंट। प्रोजेस्टेरॉन ओनली इम्प्लांट की अगर आपको हिस्ट्री मिलती है पेशेंट की और एक्सपायर्ड इम्प्लांट हो चुका है, देन स्टिल आपने एक्सपायर्ड इम्प्लांट जो इसका है उसमें 3 years एक्सीड कर जाता है, तो आपने उसमें इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन दे देनी है। नाउ IUCD, अगर रिमूवल विदाउट इमीडिएट रिप्लेसमेंट या पार्शियल और कंप्लीट एक्सपल्शन का सिनेरियो हो या थ्रेड मिसिंग हो एंड IUC लोकेशन अननोन हो, तो इसमें हम क्या करेंगे? इसमें भी सॉरी गाइस, जस्ट गिव मी 5 minutes, sorry 1 minute. ओके, सो अगर रिमूवल विदाउट इमीडिएट कॉपर कॉइल रिमूव की और इमीडिएटली रिप्लेस नहीं हुई, या फिर पार्शियल यानी एक्सपल्शन है उसकी, या फिर गिर गई है, या आपको पता ही नहीं है कि किधर गई है अननोन लोकेशन में। अच्छा, अब इसमें सिनेरियो वाइज आप डिसाइड करेंगे। अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स, सबसे पहले आप ये पूछेंगे कि उसके पिछले 7 दिन के अंदर अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है या नहीं हुआ। अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है तो आपने उसको इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन ऑफर करनी है। अब कौन सी इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन ऑफर करनी है? अगर तो वो रिमूवल है विदाउट इमीडिएट रिप्लेसमेंट, तो आप उसमें दोबारा से कॉपर कॉइल डालेंगे। अगर पार्शियल या कंप्लीट एक्सपल्शन की हिस्ट्री मिलती है, तो पार्शियल है तो निकाल दें और दोबारा से डाल दें, कंप्लीट एक्सपल्शन है तो नहीं डाल दें, थ्रेड मिसिंग एंड IUC लोकेशन है तो इस केस में आपने इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन उसको देनी है। यानी ऑप्शन में अगर कंसिडर EC लिखा होगा तो आपने EC पर टिक मारना है और उसके बाद अरेंज करवाना है इंट्रायूट्राइन डिवाइस, सॉरी अल्ट्रासाउंड स्कैन फॉर लोकलाइजेशन ऑफ दिस कॉपर कॉइल। और अगर आपको नहीं मिलता तो फिर आप एक्सरे की तरफ जाएंगे, ठीक है, नहीं मिलता तो हिस्टेरोस्कोप की तरफ जाएंगे और रिट्रीवल करेंगे, ठीक है। अब ये है कि अगर एक्सरे से तो लोकेट हो ही जाएगा, एक्सरे से लोकेट होगा तो अगर वो लेप्रोटमी करनी है तो वो लेप्रोटमी की ऑप्शन पे लगाएं,
या लैप्रोस्कोप की ऑप्शन में लगाएं अगर वो लिखा हुआ है, और अगर वो अंदर मिल जाती है और वो मतलब यूट्रस के अंदर है, देन यू कैन यूज द स्टेरोस्कोप, और उसमें रिसेक्टोस्कोप के साथ यू कैन टेक आउट द कॉपर कॉइल। और आप इस केस में इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन यू आर गोइंग टू गिव ओरल ईसी, ओके, यू विल ऑफर ओरल ईसी, और फिर अपनी अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो आंसर को चूज करेंगे। But if there is a scenario of removal without immediate replacement or partial or complete expulsion, then in that case, you can use emergency contraception in the form of copper coil. Okay? So ये एक important question है जो एग्जाम में आता है, और बहुत सारे बच्चे जो हैं परेशान हो रहे होते हैं क्योंकि इनको इसका आंसर प्रॉपर नहीं मिल रहा होता. So this is the guideline I have shown you. You see the guideline and choose the single best answer accordingly. Now, next slide is very important. So time to contraceptive effectiveness when starting 120 hours after LA1. अब आपने LA1 दे दी उसको. Now she wants to start with quick starting contraception. The ongoing contraception. तो अब आप उसको कौन सी contraception बताएंगे? आप कहेंगे कि if you want to go on to have a combined oral contraceptive pill, the requirement for additional contraception is 7 days plus 120 hours. तो अगर सिनेरियो में ऑप्शन होगी कि 7, 8, 9, 10, 11, 12. So additional contraception with combined oral contraceptive pill after Ulipristal is 12 days. आपको पता चल गया कि 12 days कैसे बने? So all of you are clear with this line? Beenish, Kazala, Shehzad Kosar, and Rafia, is it clear with you now? Hello? Am I audible to you all? Yes, ma'am. Okay. So अगर रिंग या ट्रांसडर्मल पैच वो चूज करती है, आपने LA1 उसको EC पिल के तौर पे दी है, then 120 of this plus 7 days. Similarly pills के साथ 2 plus 5, तो ये 7 days की कॉन्ट्रासेप्शन मिलेगी एडिशनल. अगर वो इम्प्लांट और इंजेक्टेबल्स की तरफ जाना चाहती है, अगेन 7 plus 5, अगेन 13 days. Okay. Oh, sorry, 12 days of additional contraception. क्लेरा टेबलेट जो है उसको 9 days ऑफ एडिशनल कॉन्ट्रासेप्शन चाहिए होता है अगर वो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में क्लेरा का फॉर्मूला यूज करना चाहती है. तो 9 plus 5, 14 days of additional contraception plus this clara. Okay, so this is how you're going to choose the options of additional contraception with LA1. Okay, now the next thing is after explaining this, let me share a few points. Okay. So the effectiveness of LA1, it would be reduced if a woman takes progestogens in the 5 days after taking LA1 and 7 days prior to taking LA1. So अगर आप LA1 की ऑप्शन यूज कर रहे हैं तो आपने हिस्ट्री में पूछना है कि 5 दिन पहले कोई प्रोजेस्टेरॉन या 7 दिन के बाद कोई प्रोजेस्टेरॉन की पिल यूज नहीं होनी चाहिए. Ulipristal is not suitable for use by women who have severe asthma controlled by oral glucocorticoids. तो अगर आपको पता चले कि सिंगल बेस्ट क्वेश्चन में एस्थमेटिक पेशेंट है, तो एस्थमा को देख के आपने यूलिप्रिस्टल को चूज, मतलब उसको क्या, आपने ये नहीं करना कि कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है. सी कि वो सिवियर एस्थमा कंट्रोल्ड बाय ओरल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है या नहीं है. तो की मैसेज इज कि आपने सिवियर एस्थमा with which is controlled by oral glucocorticoids, because LA1 एंटी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी रखती है, इसलिए हम इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन के तौर पे इन पेशेंट्स में यूज नहीं कर सकते. ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन है तो उस केस में देयर इज हाई रिलेटिव रिस्क ऑफ यूट्राइन परफोरेशन ड्यूरिंग इंसर्शन ऑफ IUCD देन नॉन ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन. सो एब्सोल्यूट रिस्क ऑफ परफोरेशन इज रो, लेकिन जब वो ब्रेस्ट फीडिंग की हिस्ट्री में आ गई है, देन कॉपर कोयल आपको थोड़ा सा 6 months के अंदर यूज नहीं करना. और ये थोड़ी सी आपने हिस्ट्री में ये चीजें देखनी है. अगर सिंगल बेस्ट आंसर में ये चीज लिखी हुई है, देन यू डोंट गो फॉर कॉपर कोयल कि वो ब्रेस्ट फीड करा रही है, 6 months के अंदर है, उसकी इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन, शी हैज कम हियर फॉर इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन. इन दैट केस रिलेटिव रिस्क उसकी प्रेगनेंसी का लो है, लेकिन फिर भी अगर वो ब्रेस्ट फीड सही नहीं करवा रही, तो इन दैट केस ईसी उसकी बनती है, लेकिन ईसी में फिर कॉपर कोयल नहीं आएगी. ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन शुड बी एडवाइज नॉट टू ब्रेस्ट फीड. और अगर आप उसमें LA1 दे रहे हैं तो आपने उसका मिल्क डिस्कार्ड करना है फॉर 7 days
Ella-1 की tablet के बाद. Copper coil can be inserted up to 5 days after the first unprotected sexual intercourse in a natural menstrual cycle, or up to 5 days after the earliest state of ovulation. If copper coil is not appropriate or not acceptable, women should be advised that oral EC should be taken as soon as possible if there has been UPC within the last 5 days. EC providers should consider ulipristal Ella-1 as the first line oral for a woman who has had a unprotected sexual intercourse of 96 to 120 hours ago. So 96 hours के अंदर मैंने आपको बताया था कि 11L यूज की जा सकती है, लेकिन बेस्ट 72 आवर्स के अंदर है. इसी तरह Ella-1 जो है 96 टू, तो Ella-1 जो है वो बेस्ट है क्योंकि ये 96 टू 120 आवर्स के अंदर भी बेस्ट कवर देती है. लेकिन इंडिकेशन इसकी शर्त ये होनी चाहिए कि शी शुड बी विद इन ओवुलेशन टाइम पीरियड, यानी LH पीक से पहले. LH पीक के बाद Ella-1 भी अच्छी ऑप्शन नहीं है. Oral emergency contraception administered after ovulation is ineffective, so Ella-1 and levonorgestrel do not disrupt an existing pregnancy and not associated with fetal abnormality. ये लाइन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. Why this line is so important? क्योंकि यहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम का, और वो ये क्वेश्चन है कि patient has come to you, she wants to go on with the pregnancy, but she has used twice emergency contraception in this cycle. She is worried about the pregnancy. तो नीचे एक ऑप्शन होगी कि she can continue the pregnancy, and we have to counsel the patient that there is no association of any fetal abnormalities with this EC pill. Fourth point is EC providers should be aware that if a woman has already taken Ella-1, then 11L should not be taken in the following 5 days. तो हमने ये कहा था कि जब Ella-1 ले रहे हो तो इससे 5-7 दिन पहले और 5 दिन बाद you don't have to use any progesterone because this is a progesterone receptor modulator. Now, if a woman has already taken levonorgestrel, that is 11L, then Ella-1 could theoretically be less effective. वही बात आ गई उससे पहले, अगर EC पिल हम सेम वाली क्यों करते हैं उस साइकिल में, क्योंकि अगर लेवोनॉर्जेस्ट्रेल ली होगी और उसके 3 दिन के बाद शी कम्स अगेन कि मुझे इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन चाहिए, तो आपको प्रोजेस्टेरॉन वाली ही देनी है, आपको प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर नहीं देना, बिकॉज इससे पहले आपने अगर प्रोजेस्टेरॉन आपकी हिस्ट्री में होना चाहिए कि शी हैजंट हैड a history of usage of any progesterone prior to the prescription of Ella-1, that is of 7 days. Okay, so it's going to be less effective if taken in the following 7 days. Now, women should be advised to start suitable hormonal contraception immediately. सिर्फ emergency contraception देके घर नहीं भेजना, आप ये काम LHV के होते हैं या emergency contraception में nurses के होते हैं. Now, the important thing is that you have to evaluate for her what type of suitable contraception is suitable for her, and you have to work out for the different options and have to counsel for the patient regarding what important suitable hormone contraception can be used for continuation. The woman should be advised to wait 5 days after taking Ella-1 before starting suitable hormonal contraception, and women should be made aware that they must use condoms or abstain from sex during the 5 days waiting and then until their contraceptive method is effective. If a woman has her EC provider estimate that UPC is unlikely to have occurred during her fertile period, she may consider the option of using levonorgestrel with immediate start of hormonal contraception rather than Ella-1 with delayed start. तो अब आप कहेंगे कि ऑप्शन में आया कि पेशेंट आई है आपके पास और उसकी यूपसी हुई है और वो विद इन 40 ओवुलेशन के अंदर है और उसकी बेस्ट ऑप्शन जो है मतलब वो क्या है, तो अब और वो रिपीटेडली आपके पास क्लिनिक में आती है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन लेने के लिए. अब नीचे ऑप्शन दी होगी लेवोनॉर्जेस्ट्रेल, Ella-1 with 7 days additional period of additional contraception plus hormonal pills. Third option होगी levonorgestrel with immediate start of hormonal contraception, और फोर्थ ऑप्शन होगी कॉपर कॉइल. तो आप लोग क्या करेंगे, कॉपर कॉइल को जाकर टिक मार लेंगे, ये तो सबसे बेस्ट वाली है. लेकिन आपने सिनेरियो को नोट नहीं किया कि सिनेरियो में क्या लिखा था, वो बार बार आपके पास आ रही है. ये पेशेंट ऐसी है कि अब आप इसको कोई ना कोई अच्छी पिल पे डाल दें और ये पेशेंट रिलेक्टेंट है कॉपर कॉइल यूज करने के लिए, ठीक है. तो और ये चीज उसमें मेंशन होगी, अगर नहीं मेंशन तो इस चीज से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शी इज बीन कमिंग अगेन एंड अगेन. तो ऑप्शन में अगर एक्सप्लोर द रीजन and if she is not agreeable with the copper coil, go with the levonorgestrel EC with the immediate start of hormonal contraception.
आपने इस तरह की ऑप्शंस पे टिक मारना है और अपनी जिंदगी को आसान बनाना है. Okay, so this was regarding some important points. Let just come few more important points. अच्छा, इस टेबल की मैं बात करी थी. So this is the emergency contraception table. और बहुत सारे लोगों को इस टेबल की समझ नहीं आती. इस टेबल को समझने के लिए मैंने एक फॉर्मूला बनाया है. And you can see this formula. Previous episode अगर हो, also plus current episode less than 5 days. 2 एपिसोड के साथ आ गई है या 1 एपिसोड के साथ आई है, लेकिन विद इन 120 आवर्स के अंदर है, देन यू हैव टू ऑफर फर्स्ट लाइन एज ऑफर कॉपर कोयल. सेकेंड ऑप्शन इज प्रीवियस एपिसोड ऑल्सो प्लस करंट एपिसोड अननोन, उसको नहीं पता कितने दिन पहले हुआ. देन इन दैट केस ओरल ईसी दे दे और प्रेगनेंसी टेस्ट कर ले. ठीक है, अब आपने इस टेबल को समझना है. Currently less than 120 hours since last unprotected sexual intercourse. So yes, additional unprotected sexual intercourse, but greater than 120 hours ago. Time आपको पता है, लेकिन 120 hours से ऊपर चली गई है. Yes, currently less than 5 days after earliest likely date of ovulation, यानी ovulation के अंदर है. Yes, कॉपर कॉयल पहली ऑप्शन में आपने टिक मारना ही मारना है, लेकिन ओरल ईसी पिल भी आ जाएंगी. गॉट इट. अब यहाँ पे ये पेशेंट है लेस देन 120 आवर्स. यस, एडिशनल अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स 120 आवर्स से ऊपर नहीं पता, नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो फिर आप यानी वो लेस देन 120 आवर्स के अंदर है, पहली ऑप्शन कॉपर कॉयल और दूसरी ऑप्शन में ओरल ईसी पिल्स प्लस ऑनगोइंग कॉन्ट्रासेप्शन. अब अगर ये पेशेंट आती है 120 आवर्स सिंस लास्ट अनप्रोटेक्टेड सेक्स इंटरकोर्स, नहीं कुछ नहीं पता हमें, करंटली लेस देन 5 डेज आफ्टर अर्लीस्ट लाइकली डेट ऑफ ओवुलेशन, लेकिन अपने ओवुलेशन से कम पे 5 दिन पे है. यस, वही कॉपर कॉयल, ईसी पिल्स, हर तरह की विद क्विक स्टार्टिंग कॉन्ट्रासेप्शन. नहीं ऐसा कुछ नहीं पता, तो oral EC unlikely to be effective, and in that case only suitable option is quick starting. जब आपको कुछ नहीं पता, then you are going to offer her oral contraception. So formula is previous episode plus current episode unknown. Go with the option of pregnancy test or oral EC. But if you know previous episode plus current episode but within 5 days, और ये भी आपको पता चल गया कि ओवुलेशन से पहले, तो तीनों ऑप्शन, सबसे पहले कॉपर टी, फिर ईसी पिल, दोनों विद क्विक स्टार्टिंग मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन. सो यही सारा टेबल है जो आपको कंफ्यूज करेगा. सो यू जस्ट फॉलो दिस फॉर्मूला एंड सॉल्व योर क्वेश्चंस. ये सेकंड टेबल है, ये भी बहुत अच्छा टेबल है. इसमें भी यही बताया हुआ है 96 आवर्स से कम, तो आपके पास ऑप्शन है एला1 की, आपके पास ऑप्शन है कॉपर कोयल की, आपके पास ऑप्शन है लेवोनॉर्जेस्ट्रल की. लेकिन लेवोनॉर्जेस्ट्रल इज नॉट दैट, लेवोनेल इतनी अच्छी नहीं है क्योंकि वो 72 आवर्स के अंदर होनी चाहिए. अगर 120 आवर्स से कम की चीजें हैं, 120 आवर्स के कम का टाइम है, देन अगेन हमारे पास ओरल ईसी और कॉपर कोयल प्लस माइनस इमीडिएट कॉन्ट्रासेप्शन. अब पेशेंट का बीएमआई 26 से ज्यादा होगा, 26 होगा तो नहीं, 26 से ज्यादा होगा या 70 से ज्यादा होगा, देन इन दैट केस एला1 ऑप्शन नहीं बनती. हमारे पास डबल डोज लेवोनॉर्जेस्ट्रल की बनती है या फिर कॉपर कोयल की बनती है. सो दिस इज द होल टेबल. ये मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया आपको. नाउ कंसिडर, ये वही चीजें हैं जो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन डिफरेंट स्लाइड्स, और इंड्यूसर्स के साथ 28 डे का कवर देना है इफ यू आर यूजिंग ओरल ईसी विद क्विक स्टार्टिंग, और इंड्यूसर्स में आपने एला1 नहीं देनी. गॉट इट. सो दिस वाज रिगार्डिंग इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन. आई होप I've tried to make all of the points very clear. Now after this, let me just take you through some important questions to see कि आप लोगों को कितनी समझ आई. Okay, so who is willing to answer this question?
A 42-year-old woman A 42-year-old woman, she presents to the labor ward at 34 weeks of gestation in preterm labor. She progresses very quickly and proceeds to have an emergency cesarean section due to fetal distress. She was discharged home after 1 week as her baby was admitted to the special care baby unit. 2 weeks later, she attends her GP seeking contraception. She wants to continue to breastfeed her baby. So, what is the best option? Progesterone only pill, combined pills, levonorgestrel, or copper coil? Anybody who wants to answer this question? Ghazala, Shehzad Kosar, Rafia. So what type of emergency? Progesterone? Yes? Progesterone only pill? Yes, that's great. Wonderful. Now move on to your next question. A 20-year-old woman presents to the emergency contraception gynae services. And now at midnight for advice, she gives a history of condom rupture while having sexual intercourse 3 hours ago. She is worried that she will get pregnant and her parents are going to abandon her. So what is the best option? Copper coil, levonorgestrel, or that is Ella1? Okay, so what is the best option? Who's going to answer this? Levonorgestrel. Yes. So अब इस क्वेश्चन में कुछ बातें मिसिंग है, ठीक है? अगर इस क्वेश्चन में हमें ये पता चल जाए कि ये साइकिल के किस फेज में है, ओवुलेशन से पहले वाले फेज में है या बाद वाले फेज में है, तो हमारी चॉइसेस चेंज भी हो सकती है. ओके, तो अगर इस क्वेश्चन के अंदर कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हो, लाइक इंफॉर्मेशन लाइक शी इज हियर ऑन डे 19th ऑफ हर साइकिल, तो फिर हमारी ऑप्शन क्या बनेगी? Copper. Copper Right. coil. Great. Okay. Now move on to your next question. A 28-year-old happily married woman, she presents to the family planning clinic for advice. She gives a history of unprotected intercourse 3 days ago and doesn't want to get pregnant. She is also looking for long-term contraception. She has 2 children who are primary school age. What is the best method of emergency contraception? Copper ICD. That's great. So levonorgestrel IUS is not recommended or licensed for emergency contraception. तो इसमें हम मायरीना नहीं रख सकते क्योंकि वो emergency contraception के तौर पे यूज नहीं होती. So अगर कोई मायरीना की option ऐसी हो, you're not going to choose that. You're going to go for copper coil. This can be inserted up to 5 days after her unprotected intercourse or from ovulation, and it is important to consider antibacterial prophylaxis and infection screening for possible STI at the same time. So you also have to look for these information also. Okay. The next question, a 20-year-old Asian, okay, so let's move on to the next question. Okay. A 28-year-old woman, Para 2, she attends the Family Planning Center for contraceptive advice. She's keen to take long-term contraception. However, she suffers from menorrhagia, for which she is currently taking tranexamic acid. So which is the best type of contraception plus treatment you're going to give her? Myrina. Myrina, that's great. So I hope most of you have understood the concept of emergency contraception with the ongoing contraception, and I've tried to make these tables which are present in FSRH guideline easier for you. I would recommend you all guys to see this emergency FSRH guideline today, read it, because right now you have gone through this guideline with me, and later on if you find out any queries with me, you can contact our team and we can arrange another session for addressing your queries. Is there any other questions regarding this? Regarding this topic? Ghazala, Shehzad, Rafia.
Madam, my one question is that if the patient is breastfeeding, and so when we in the history, so never give the IUCD as an emergency contraception. If she's Yeah, on it the breastfeed. depends. Yeah, it depends that if she is within 6 months of breastfeeding or not, and if she's exclusively breastfeed or not. So if she is not exclusive breastfeeding, she is within 6 months, she comes with the she comes for the emergency contraception, and in that case, if there is an option of oral EC pill, myrine levonorgestrel, that is Levonil, then give that. But according to the scenario, you have to go. If she is within 14 days of her cycle, then you're going to choose oral EC as your first choice because of the perforation risk. But if she is after the, she comes with you and she asks for EC pill and she's breastfeeding and she's in the later half of the cycle, then the first and important thing, irrespective of the perforation, you're going to choose Coil. Okay. Okay, thank you, madam. Okay, any other question, girls? Okay, so I hope I've made most of your queries clear today. So we have been conducting our course for FCPS Part 2 written and also MCPS Part 2 written. And if anybody of you are willing to take help for MRCOG courses, because I've also been a mentor of MRCOG, MRCPI exam, and FSCOG USA. So if you want any of the help regarding your written exam, we've been starting our course for written FCPS and MCPS, and you need to contact our team. So the key team would tell you that when are we starting our course for written. So here in our course, we are going to conduct different topics, live sessions, plus we will be conducting a test for you. There will be webinars for addressing the queries of your test. टेस्ट होंगे प्रॉपर, उसमें नंबर्स आएंगे, जो क्वेश्चंस आपके गलत हुए हैं वी आर गोइंग टू एड्रेस दोस क्वेरीज आल्सो. फिर कुछ सेशंस होंगे जिसमें आपके रिकॉल्स होंगे और आपके पिछले 5 years के रिकॉल्स. वी आर गोइंग टू हैव अ टेस्ट of all the recalls, 100 recalls till the time you go for your exam. So if you're interested in this course, so you can contact med exam expert team. They're going to tell you the whole program जो हम उसमें करने जाएंगे, लाइव सेशंस, रिकॉर्डेड सेशंस, प्लस हर टॉपिक के बाद उसका टेस्ट विद एसपीएस, और फिर आखिर में रिकॉल टेस्ट होंगे जो पिछले 5 साल के होंगे. ठीक है? इफ यू आर ऑल इंटरेस्टेड देन यू कैन कॉन्टेक्ट द मेड एग्जाम एक्सपर्ट. ओके. Okay, thank you, ma'am. Thank you, girls.